just for all of you to know, I'm Kaushal Chokshi. I'm a CEO of a company called Marsbazaar.com. We are based out of Vadodara in Gujarat. And something that we do is picking up in Gujarat, especially after the COVID times when the manufacturing side of things has picked up due to numerous government policies. So yeah, two three things. This is an interactive session. आप जो भी पूछना चाहे मुझे वहां पे रोक के पूछिएगा. I'll be more than happy to provide my peace of mind. This is not a theory or something like that. I don't know how Hitesh does his other programs, but I'm a businessman and I'm interacting with businessmen. So वो क्या है, आप प्ले जितना हो उतना मजा आएगा, right? So before this is just what we are going to do in the next 40 to 45 minutes. So all of you get a understanding of what we are trying to get out of this session as a value proposition. So speaker introduction, first of all, value proposition. So I mean, I was told by Hitesh sir that you are second generation, some of you third generation business owners, businessmen who have settled businesses or who are going to start new businesses. So always remember this word value proposition. It's not a word, it's a concept, it's a perspective, that if I am trading my time to provide something, the other person should get value out of it. So what is the value that you're going to get out of this program for the next 45 minutes or so is we're going to go through okay, why there's certain very factual and important pointers that you should manufacturing in India. What are the opportunities available on a factual basis, on a practical basis, to manufacture in India? अभी के challenges कौन कौन से है? मैं वो theory या government जो बोलती है उसमें नहीं, fundamental level पे जैसे सर ने बोला, I have worked with certain companies at the level of Zydus and J Chemicals and Pidilite. So I'm going to go into the challenges that companies of those level face, which then bounce to MSMEs who are vendors of those companies. Solutions to challenges, there are many business models, many concepts, many technologies which have now mushroomed in the last especially 3 to 4 years after COVID, which are getting implemented at a pretty large scale level in India. So what that might be, and the company introduction of a very short company introduction of Marsbazaar.com, which is my company. One minute, just 1 minute. रोज भी घर पे बहस करके हाँ इसी बहस करेगा तो होएगा पहले से समझदार हुआ होगा. Sorry about that. My wife is not home and domestic chores uh pertain. Yeah. So before going into that thing, why am I adept to give this session, or why Hitesh sir has asked me to convene this talk is that I have knowledge of more than 15 industries. I'm an MBA from University of Leeds, UK, and I've been dabbling in business consulting and market research projects since 10 years now. I've executed more than 35 projects, and I've founded 3 companies. One is a business consulting company, another is an industrial marketplace, and another is an ecosystem for residential and commercial properties. And 2 companies have started in last couple of years. I've been responsible directly through my strategies for growing top line of more than 75 CR for this 35 companies that I spoke about. I've been a regional trainer at BNI for last 3+ years, and I've developed business models and financial models of more than 25 companies. Most importantly, I've worked with a lot of reputed companies of India. So that sort of domain expertise also comes into play, right? So without further ado, वापस से बोलना चाहूंगा, कुछ भी क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ हो तो प्लीज मुझे पूछिएगा. I'll be more than happy to provide my insights. So why manufacturing in India? So out of more than 250 years that we go back, when India was sort of a manufacturing hub, वो क्या हुआ ब्रिटिश डोमिनेंस के बाद, और उसके बाद जहाँ पे से सर्विसेज और एग्रीकल्चर फिर बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, is
There's certain aspects to it. Geopolitical aspects, market aspects have aligned in such a manner wherein India is now going to have, uh, objectively speaking, analytically speaking, the highest GDP growth in next 5 years. So उसका उसका impact क्या होता है कि अगर आपको GDP growth consistently करना है तो manufacturing is the primary activity through which secondary activities of servicing and tertiary activities of consulting are sprung up, right? So manufacturing will have to happen if government at the central level, if foreign trade agreements which are happening at a global level would have to come into existence. And if you'll just see the data of last 5 to 7 years, I mean, we've been consistently logging growths of good 5 to 6% on the GDP side, and that is primarily because of the manufacturing initiatives that the country as a whole has taken. दूसरे क्या सिस्टम है कि हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत कम है. उसका सीधा हिसाब ये है कि इतने सारे लोग हैं, सबको नौकरी चाहिए, सबको सबको बहुतों को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उसके बेसिस पे कॉस्टिंग बहुत लो पड़ती है लेबर की. इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, प्रिडोमिनेंटली 70% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली स्पीक्स इंग्लिश, एंड व्हेन यू हैव 90% प्लस पॉपुलेशन स्पीकिंग इंग्लिश इन अ पर्टिकुलर रीजन, इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट एंड गेट योर things done. Strategic location, you have Southeast Asia, you have Europe, you have Dubai, you have Africa. If you can see the nexus, for example, the port of the Dahej, Nhava Sheva in Mumbai, Pondicherry on the eastern side, Visakhapatnam, not Pondicherry. These are all strategically located to send goods to regions across the globe. Ideal manufacturing infrastructure. I mean, we are just opening up. मैं तो यही बोलूंगा कि we are just opening up in terms of production linked incentives, or huge bulk truck parks, food parks, and all of these that are coming up as infrastructure, which will only help to further this cause of manufacture that is going to happen. And for young people like you, skill sets, technically speaking, Indians, the DNA of Indians are running the global scene right now. You see the CEOs of Microsoft, Google, PepsiCo, and all these companies, they are Indian by descent, birth, or origin. And why something like that happens? Culturally speaking, we are one of the most technically accomplished races in the whole world. So skill sets is inherently which is needed in manufacturing industry, and we have that. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. सो आप लोग जो नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं ना, उनको मैं एक सजेशन दूंगा. आप अभी भी ग्लोबल मीडिया सोर्सेस या इंफॉर्मेशन सोर्सेस पे जाइए और पूरा एनालाइज कीजिए कि इंडिया ने पिछले 2 साल में कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए. अगर वो आप देखोगे ना, तो दैट इन इटसेल्फ ओपन्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि यार इंडिया ने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पे अभी टैक्सेशन कम लगेगा या नहीं लगेगा. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा काम होगा. फॉर एग्जांपल, मिनरल्स इज वन ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी टाइड अप ऑन द FTA basis with Australia. We have done similarly FTAs with UAE, Finland, South Asia, Argentina, and Chile in just last 2.5 years. So now what this tells me is a manufacturing company, it is sitting in Morbi, is directly doing business with companies in Argentina and Chile. Now that in itself is such an impactful process and collaboration, wherein I mean, all the way up to South America, अगर आप कुछ बना रहे हो और आपको पूरा थ्रू एंड थ्रू पता चल गया कि मुझे गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है वहां पे मेरा माल बेचने को, तो आप क्यों धंधा नहीं करोगे ग्लोबल लेवल पे. सो दैट इज द थर्ड रीजन. Plus, yes, most of you are from business family, so you will know about this. There are lots of subsidies, production-linked incentives in various chemical, pharma, food and beverage, textile industries that government is coming up with. क्या आप 100 रुपया लगाते हो तो गवर्नमेंट उसका ऊपर का 10, 20, 25 रुपया जो भी है वो लगाएगी और आपको हेल्प करेगी, especially greenfield manufacturing entrepreneurs, to start your own MSMEs and build on that, right? There are Atmanirbhar policy, Make in India policy, which are happening
विच डायरेक्टली टेल टू पीपल कि आप सर्विस वर्विस रहने दीजिए, आपने जमीन ली, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो गवर्नमेंट आपको रुपये के अलावा टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगा, मार्केट क्रिएशन में भी हेल्प करेगा, R&D में भी हेल्प करेगा। इनफैक्ट देयर इज अ मार्केटिंग सब्सिडी ऑल्सो, कि जैसे आपने आपका एग्जीबिशन दुबई में या कहीं पे किया, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको 2.5-3 लाख तक हेल्प करता है। सो व्हाट ऑल ऑफ दिस टेल्स इज के, आई मीन, इट्स अ गोल्डन जनरेशन फॉर टू स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन, इट्स एज सिंपल एज दैट। देन चाइना प्लस वन पॉलिसी, with the Russia-Ukraine war, with the Chinese Cold War, with the Americans going on basically on the west side. Now more with the Israel Gaza disruptions that are coming in. Believe believe me, you that we are, apart from Indonesia, Vietnam, and Singapore, we are the only option when it comes to this Western economies wanting to look for products that were made in China to now, I mean, Foxconn for iPhone being one of the biggest examples that you can get for this China plus one policy. There are many semiconductors also which are coming up in Gujarat. In fact, there's a semiconductor park which will come up in the next 2 to 3 years in Gujarat. So that is all because of the China plus one policy. Business friendly central government. मैं गुजराती हूँ, तो मैं जो टॉप के दो गुजराती लोग जो चला रहे देश, उनकी बड़ाई करूंगा ही करूंगा कि 10 साल से जितना अच्छा बिजनेस फ्रेंडलीनेस क्लाइमेट या इकोसिस्टम अभी इंडिया का हुआ है, वो बहुत कम कंट्रीज का हुआ है अक्रॉस द ग्लोब। एंड ऑफ कोर्स योर जीतोप्रेन्योर्स, startup is in your blood, and it's such a robust ecosystem. I mean, yesterday only I was reading that NSE has done more than around 600 SME IPOs in last 1 year, some 150 200 being in Mumbai, and around 130 140 being in Gujarat. So what this tells is that now, and majority of them were financial services startups and manufacturing startups. So yes, I mean, रुपया मिल रहा है पब्लिक का, गवर्नमेंट का, इसलिए स्टार्टअप हो रहा है, और ऑल ऑफ दिस tells me that manufacturing is not going to be is the sunrise sector when it comes to India. मैंने बहुत एक साइड की चीज हो गई। हितेश सर, इफ यू कैन जस्ट आस्क समवन इफ दे हैव any inputs, or if you want any inputs to happen or something. No, I know that each and every person who has joined by choice. So these all are having your ear, right? So don't worry. They will ask in the end if they have anything. So I know actually the Super. crowd. So the crowd is very genuine. Yeah, go ahead. Great. So now, what are the opportunities? I mean, अगर 2-3 महीने पहले हम लोग ने चाइना को भी ओवरटेक कर दिया पॉपुलेशन में, अभी उनको खाना है पीना है, ये सीधा हिसाब है। उनको खाना पीना है, उनको गुड्स खरीदना है। मिडिल क्लास अब अपर मिडिल क्लास में जा रहा है, अपर मिडिल क्लास अब रिच क्लास में जा रहा है। तो इस सब का मतलब क्या होता है कि मेरा कंजम्पशन पैटर्न में एक्सपोर्ट सोचूं, उससे पहले विद इन इंडिया ही इतना सारा है कि मुझे मैन्युफैक्चर करने के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, right? So that is the first, and second thing, jugaad culture. Now this is a very interesting word which I like to throw in many of my talks, that the innovation quotient or the jugaad quotient that Indians have to find solutions to problems is unparalleled across the globe. I mean, I've traveled extensively to some countries, and the things which a normal middle class person who does a job in India thinks is being touted as a consulting deliverable worth lakhs of rupees in a western market. इसका मतलब क्या है कि जो रास्ते चलता आदमी इंडिया में सोच रहा है ना, वो पैकेज करके बीसीजी या मैकेंजी जैसी कंपनी है ना, बाहर में चार्ज कर रही है। सो हाउ डू वी यूटिलाइज दिस क्या बोलते हैं उसको, इनोवेशन और क्रिएटिविटी और कल्चरल थिंग दैट वी हैव गोइंग ऑन इन इंडिया। रेजिलियंट इकोनॉमी, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स 2008-9 हुआ यूएसए में, अभी बहुत सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रहा है। यू ऑलवेज थॉट दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ ग्रोथ स्टोरी विच हैज ऑलवेज मूव्ड अहेड on a very resilient basis and has given growth and has always
been immune to these shocks that are globally happening across the world. Potential for manufacturing. If you'll see, India is an agrarian economy till date. I mean, 60 to 65% of our GDP is directly or indirectly related to agricultural activities still. So there's a huge scope for manufacturing to happen, and if you'll see, the government is also then moving their uh, policies or thought process to this fact. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड लॉ सब्सिडीज की बात हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो गई. सो दीज आर वेरी जेनरिक पॉइंट्स एज टू व्हाई इंडिया प्रेजेंट्स अ मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी which people like you should lapse on to. Now coming to more specifics in terms of, as Hitesh sir says, my dad has been involved in uh, uh, providing industrial solutions for more than 25 years now. He's worked with companies like Borosil, Jindal, IVRCL, Rallis, Tata. And what happened, or what was that spark which started my company Marsbazaar.com? I'll just take you guys through that, because that will entail certain challenges which most of you will face when I mean, if you are having manufacturing entities, I'm sure you will be able to relate to some of these problems. If you'll start, these are some of the challenges that you should always keep in mind. So first things first, he had this spark. Kaushal, यार ये अपना 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स मकान.com जैसे रेसिडेंशियल या कमर्शियल पोर्टल्स है, वैसे इंडस्ट्री का एक भी पोर्टल नहीं है. और जो एक डील 1.5 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ की रेसिडेंस या कमर्शियल में होती है, ऑन अ मिनिमम अ डील स्टार्ट्स फ्रॉम 10 CR प्लस व्हेन यू डू अ इंडस्ट्रियल डील. So having said that, there are not many options in terms of information clarification. ये आप लिख दीजिएगा कि आप entrepreneurs बनने वाले हैं. First things first that should happen is there should be a clarity कि मेरा रुपया कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, और उसमें से मुझे क्या सेफ्टी है कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कैसे मिलेगा. सो आज की डेट में अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहूं, तो मुझे पहले क्या कराना पड़ेगा. एंड दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. दिस कल्चर is just starting in India from last 8-10 years, and I am one of those guys who do it. Is something called as market feasibility or market research. That what should I make? Something as simple as, मतलब अगर मैं नया धंधा चालू करना चाहता हूं, तो मुझे मोबाइल की यूनिट डालना है, मुझे पेंसिल का यूनिट डालना है, मुझे फार्मा का यूनिट डालना है, फार्मा में कौन सा यूनिट डालना है. दैट शुड बी द प्राइमा फेसी इनिशिएशन पॉइंट. और अगर आपको पता भी है, फिर भी ये करना चाहिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज, इंडिया में क्या कल्चर है कि बाजू वाले ने यार बहुत अच्छा, उसका तो चल गया, उसने प्लास्टिक यूनिट डाला तो मैं भी डाल देता हूँ. नाउ 10 में से 6 या 5 मैं बोलता हूं आपको एनालिसिस करके देंगे कि वो फेल हो जाएगा. अब बाप के पास उतना रुपया है कि करोड़ों फेल होने के बाद भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो अलग बात है. लेकिन दूसरा एक वायबल ऑल्टरनेटिव है कि 2 5 10 लाख आप खरीद के एक मार्केट रिसर्च करवाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि अगले 5 7 10 साल में मुझे कहाँ कहाँ रुपया डालना है, मेरा क्या पेस्टल स्वॉट एनालिसिस, बहुत कुछ है जहां से मुझे पता चलेगा कि मेरी मेरी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी क्या है एक प्रोडक्ट का या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में. मार्केट कैसा है, सप्लाई कहाँ से आएगा, एक्सपोर्ट का क्या है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू. So Kaushal, so Yeah, someone is asking, and I'll take a few questions, right? yeah, So yeah, he's please, saying, please. so how can we do the market research for a particular idea or a business? You said that we should do, but the first thought which comes in mind, are these people going to charge a lot? Are they actually are good people? Will they really give me insights? I mean, how do we go about doing any market feasibility? सर, मैं ये ना एकदम बनिए के जैसे, मैं बनिया ही हूँ, तो हाँ, उस हिसाब से आंसर देने वाला हूँ. मैं कुछ हैवी हिटिंग वर्ड्स नहीं यूज करने वाला. इसके हाँ, दो ऑप्शन है. अभी क्या होता है कि बड़ी कंपनीज जो है ना,
वो रिलायंस या अदानी टाइप, या मतलब सेकंड टीयर में आप सोच लो तो यस बैंक टाइप या ऐसी, वो लोग क्या करेंगे, दे गो टू कंपनीज लाइक डेलॉयट, केपीएमजी, मैकेंजी, who's charging or ongoing rates start from a minimum of 10-15 lakhs for any sort of market research. First of all, just to understand, I'm sure most of you will know, लेकिन मार्केट रिसर्च का सीधा मतलब क्या है कि मैं डेटा और स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मेरा 5 साल का या 7 साल का प्लान डॉक्यूमेंट कर लो, अक्रॉस फाइनेंस, अक्रॉस मार्केटिंग, अक्रॉस ऑपरेशंस, अक्रॉस ह्यूमन रिसोर्स। सो उससे क्या होता है कि नाउ आई एम वेरी क्लियर कि यार मेरा मिशन क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा प्रैक्टिकल गोल क्या है, और मुझे अगले 5 साल का पूरा एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंटेड वे में रेडी है, जो एकदम फैक्चुअल है, जो एकदम प्रैक्टिकल है। नाउ गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल कि आपको केपीएमजी डेलॉइट क्या करेगा, वो आपको डेटा देगा, और डेटा देने के बाद आपको क्या बोलेगा, या तो इसका एग्जीक्यूशन कराना है तो आप मेरी दूसरी टीम के पास जाइए, वो आपको फर्दर चार्ज करके एग्जीक्यूशन करके देगा, बराबर है। नाउ दिस इज हाउ द operational machinery of all these global consulting firms work, and they do an amazing work of it, but I am sure 80% of MSMEs of India won't be able to afford them. So now दूसरा क्या उसका सॉल्यूशन आ जाता है कि you go to local consulting companies, right, like us. उसमें क्या होता है कि आपको, जैसे मैं आपको एकदम ब्लंटली बोल देता हूँ, बोल के बोल देता हूँ कि मेरा मेरा मार्केट रिसर्च का चार्ज है ना 2.5 से 3 लाख का चलता है, जिसमें 6 महीने का आपको पूरा एक इंटरवेंशन पीरियड होता है, एक असाइनमेंट होता है, जहाँ पे ज्ञान दे के छूटने का बात नहीं है। आप डेटा का करोगे क्या यार, बहुत सीधा हिसाब है। अगर मुझे पता होता कि मुझे ये डेटा का क्या करना है, राइट, तो मैं खुद से ही ना चले चालू कर देता, नहीं, there is a hand holding which happens, right? Okay, how do you interpret that data, how do you strategize that data, and how do you implement the findings of that data into your day to day and strategic activities? Day to day activities में क्या होता है कि भाई आज का क्या काम हुआ, उसका ट्रैकिंग क्या है, और स्ट्रेटेजिक में क्या होता है कि 3 महीने में जो वो टॉप लाइन का टारगेट रखा था वो मीट हुआ कि नहीं हुआ, तो अब आगे क्या अच्छा कर सकते हैं, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। So that is what, or at a local level, these are the consulting companies that you should employ to give you this clarity, right? Yes, I'm helpful. Go ahead. Yeah. There are some other questions also, if you can, or should I do it? I will check actually, and so any question which is important, I'll like ask you. The others are like also important, but we'll just wait because you are going to cover all that. तो नाउ मार्केट रिसर्च से आपको क्या होगा कि अब ये जो अनऑर्गेनाइज लोकल इकोसिस्टम है ना, उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी कि लैंड एक्विजिशन में क्या कंप्लायंस है, क्या प्रोसेस है, किसके पास जाना पड़ता है, क्या चार्ज करता है, तो सब compliance में I'll tell you, me and Hitesh just over a dinner we just discussing, if you want to put in even a small greenfield manufacturing unit in Gujarat, I can only speak about Gujarat, you need to approach more than 135 agencies. इसमें 60-70 वेंडर्स आ जाते हैं, इसमें 12-15 जमीन रिलेटेड एजेंसी आ जाती है, इसमें 20 से 25 कंप्लायंस और लाइसेंसेस रिलेटेड एजेंसी आ जाती है। आपको सीटी, सीटीओ, फैक्ट्री प्लान, इलेक्ट्रिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, जीपीसीबी, ये सब वन एंड थ्रू करके जाना पड़ता है। नाउ टेल मी, एक मैं पीडीलाइट का ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ, पीडीलाइट का काम सर फेविकॉल बनाना है या गांधीनगर में गोल गोल चक्कर लगाना है? तो ये सीधा हिसाब है कि ये सब आपको अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज। सो दिस इज द चैलेंज कि मुझे कुछ बनाना है, लेकिन मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं। हाँ, मुझे डेटा मिल रहा है ऑनलाइन, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का क्या। तो सेकंड पॉइंट इज दैट
कि गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा, इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन पोर्टल है, बहुत मेक इन इंडिया पोर्टल है, उस पर डेटा तो बहुत निकल रहा है, लैंड बैंक का पोर्टल है, लेकिन वो डेटा का करूँ क्या? क्योंकि लोकल लेवल पे मुझे गवर्नमेंट जितना एफिशिएंटली, I'll give you an example, Hitesher. If you'll go to Japan, you'll go to Germany, you tell them that I want to establish a textile manufacturing unit. They'll straight away tell you, go to this person who sits in this city. वहां पे आपका पूरा बड़े ये आपके टीवी में दिखा देंगे कि ये आपकी जगह है जहाँ पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी, ये पॉलिसी है, ये L1 L2 L3 के वेंडर है। आपका 6-8 महीने में सर यूनिट बन के तैयार। एक इंडस्ट्री वाले के लिए क्या होता है कि जितना डिले होता है उतना जेब का ही रुपया जा रहा है ना। So that is the second challenge that we are facing, and through some initiatives of companies like us who have that local intelligence, we are trying to eradicate that thing. थर्ड, नो वन स्टॉप सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म। जैसे सीधा बात हुआ कि मेरा काम फेविकॉल बनाना है यार, मेरा काम टायर बनाना है, आप मुझे कहाँ ये कंप्लायंस या लैंड एक्विजिशन के झमेले में डाल रहे हो? And I'll tell you, huge companies can afford paying 2 lakhs, 3 lakhs a month to a lawyer to find this out कि इसमें कुछ जमीन में कुछ किसी का बोझा नहीं है ना, लेकिन छोटी कंपनी कैसे हायर करेगी वो सर? Right, so that is the third. Fourth is unstable legal grievance mechanism. I will tell you classic case. There's a Taiwanese company who bought a land of 2.5 crore in Kotambi. They even erected वो क्या बोलते हैं उसको, ये जो अपना फेंसिंग करता है ना, वो करके 1.5 साल बाद पता चला कि एक फार्मर ने एनओसी नहीं दिया था सर, वो पूरा रुपया डूब गया और वो चले गए। This is happening at a global level, and this is a case study of 3 years ago. इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी ने ठीक से गाइड नहीं किया तो मेरे पास कोई लीगल ग्रीवियंस मैकेनिज्म ही नहीं है जहां पे से मैं अब वो तारीख पे तारीख अभी तक वो चल रहा है। सो दिस इज अ चैलेंज विच इज हैपनिंग। लैक ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वेरिड फाइनेंसिंग ऑप्शंस। गवर्नमेंट इज सिटिंग, bankers are given targets के तू लोन दे, तू सब्सिडी दे। I'll give you a data, not even 10% of the subsidy amount which the government of Gujarat has earmarked is being utilized by the industries, just because they don't have the knowledge of it. कि प्रैक्टिकली जैसे मैंने आपको ये बोला कि R&D के लिए, मार्केटिंग के लिए, बॉयलर सेटअप के लिए, ये सबके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रहा है, लोन दे रहा है। देयर इज अ 35% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी इन बाइंग ऑफ मशीनरी दैट यू गेट इन गुजरात। There's no penetration. How many people, how many manufacturers know about it, know about this at a local level? Not many, right? Inadequate usage of technology. I am not using data properly. That is a sad reality of most of the MSMEs in India. इसमें क्या है, वो second generation, third generation का आ गया तो अभी चेंज हो रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग में हिस्टोरिकली स्पीकिंग इंडिया में उतना इंपॉर्टेंस रहा ही नहीं। हाँ, मैं एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग में IoT IIoT सब यूज कर लूंगा, लेकिन उससे पहले का जो टेक्नोलॉजी है, मतलब आप सैप को करोड़ रुपया दे दोगे और उसका यूटिलाइज करोगे 1%। You will know, sir, this is truth for most of the industrial units of India. Time taken in decision making and implementation by certain government bodies. लोकल लेवल पे अगर आपका वो जुगाड़ या लागवग नहीं है, जो गुजराती में बोलते हैं, तो आपका काम एकदम इजीली टाइम में होने ही नहीं वाला। दैट्स द सैड रियलिटी एज ऑफ नाउ, ऑल्दो इट्स बीन चेंजिंग इन सर्टन स्टेट्स लाइक गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, दैट आई नो ऑफ, बट स्टिल एट सर्टन लेवल्स दिस इज स्टिल एन इश्यू। एंड ये मार्केट फिजिबिलिटी का ही है, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, which product should I manufacture? That is also a challenge, wherein there is no proper knowledge or logical thinking or intelligence that is being put behind answers to this question. So these are some of the present challenges. If there are any questions on this topic before I move on to the next slide. I think it is one of the most important topics which we all had in our mind, and it came up again and again in our internal workshops, etc., which we did. So
So to get intelligence from the market, right? Is it customer surveys? I mean, what kind of market feasibility analysis is all this, right? Just help us understand that. If anyone wants to do on their own, which is Yeah. what I mean. So Right? there are two types of research methodologies. And one is called as primary research, जो ये FMCG कंपनी प्राइमरी सर्वे करते हैं ना, वो डिमांड वाले आपको फॉर्म भराते हैं, वो प्राइमरी रिसर्च है ठीक कि है। आप मार्केट में जाके जो एंड यूजर है या पोटेंशियल आपका प्रोडक्ट बायर है, उसको ऐसे कुछ सवाल पूछिए जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बराबर है। अब इसमें क्या है, इसमें अभी डेटा इंटेग्रिटी का बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि जिससे मैं पूछने जा रहा हूँ उसका दिमाग का हालत क्या है, बराबर है, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, मैं किसको पूछ रहा हूँ, ये सब के बेसिस पे वो डेटा का वैलिडेशन या क्वालिटी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है, बट यू शुड कीप दिस इन माइंड. And the second type of research is secondary research. Now, with the advent of Chat GPT, with other bad or AI based information portals that are there now, this thing becomes very easy. Wherein the point of market research is not to accumulate data. Data intelligence is how do you act on that data. And the concept of guesstimation is so underutilized in India कि यार मुझे परफेक्ट डेटा कैसे, क्या मतलब, मुझे अगर 60 70 80% क्वालिटी ऑफ डेटा से अगर मैं उसका फिर फर्दर एक्सप्लोरेशन कर सकता हूं, तो उसके बेसिस पे मेरा काम तो चालू हो जाए. ये चीज बहुत कम होती है, क्योंकि इंडिया में क्या है, कंसल्टिंग में अभी भी वो थियरी वाला कल्चर है कि पूरा पूरा एकदम 10 बार मेरे ईगो की बेसिस पे भी मैं पूछूंगा कि यार ऐसा थोड़ी ऐसा होता है, लेकिन भाई तुझे वो जरूरत है कि नहीं, राइट? What you require is interpretation of that data. So these are the two aspects through which market feasibility should ideally be done, not only in India, in any part of the world. And again, actually, the last point on your side, selection of products. I mean, is it across product categories you help, or is it within, say, I want to focus on the medical equipments, in that you help, or it could be either a medical or a food item or a chemical. I mean, this is infinite list, right? If you ask me, this is infinite. So, I mean, how can anyone do a research, right? What is the approach? How do we choose 2 or 3 products जिसके अंदर हम करें research और फिर हमारा decision है? So, sir, there's a funneling mechanism to this, right? As you said, जो आपने बोला ना, उसको मैं 2 चीजों में डालूंगा. एक के, और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरे पापा का प्लास्टिक का धंधा है, तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, पीपल, skill sets, domain expertise is set on plastic. Now what research I do is कि प्लास्टिक में अब पोटेंशियल कौन से प्रोडक्ट्स होने वाले हैं जो मुझे हाई ग्रोथ देंगे. Right. That is one type. The second type is what I say, development from scratch. कि मुझे नहीं पता, मुझे ये रिपोर्ट चाहिए कि अगले 5 साल 10 साल में कौन सी इंडस्ट्रीज सनराइज इंडस्ट्रीज होने वाले, और उसमें से जैसे मैंने वो बोला कि फनलिंग कर करके कैटेगरीज और सब कैटेगरीज पे बीच में आके आप आपके टॉप 3 या 5 प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है. कहाँ पे आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, आपका डिमांड कहाँ पे है, आपकी डोमेन एक्सपर्टीज कैसे जनरेट होगी, कैसे. आज की डेट में कोई मुझे डायरेक्टली पूछेगा ना कि किसमें मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, मैं गुजरात में बैठे 3 इंडस्ट्री डायरेक्ट बोल दूंगा कि आपको फार्मा, केमिकल और ईवी, ये टॉप 3 है अभी के डेट में जो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज आई नो कि देयर इज अ सुपर्ब डिमांड विच इज गोइंग टू बी हैड इन द नेक्स्ट व्हाटसोएवर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. But now it all depends. Establishing a pharma unit is not a cost efficient project at all. You need to have a minimum investment scale of more than 10 CR to even think about it. So अब मेरे पास 10 करोड़ नहीं है, हर किसी के पास 10 करोड़ नहीं होता, right? तो क्या? So all of these permutations and combinations के basis. I want to open it up. I think Aman and Rushabh have got a similar question which I had.
So feel free to ask if you feel it is still unanswered. Rushabh Sanghvi and Aman K. So feel free to ask your question, please. So unmute and ask. Aman or Rushabh Sanghvi? Hello. Yeah, hi. Hi, Aman. Hi. Go ahead. So yeah, my question was like, first of all, good evening. Good evening. My question is like, what are the strategies you use? So suppose I'm looking to open a servo motor unit and like to procure the raw materials for it, right? How do I analyze कि ये availabilities कहाँ या कौन से region में मेरे को मिलेंगे तो better productivity रहेगी क्योंकि initially you will be not just making that product, you'll be doing a lot of R&D. So the primary like reachability to have the like raw material, right, will be Right. needing it's a fast product. So Right. that's how do you analyze that? So, I mean, the simple answer to this, Aman, right? What we Yeah, are, what we've been yeah, discussing with Hitesh, I mean, it has to be a customized, specific market research solution to it, wherein you set uh, क्या बोलते हैं उसको product framework or a business model. Okay, this is what I want to do. This is what I know. Now the strategic questions are these 10. Now how do you uh, get on answering one by one? जैसे आपने बोला कि रॉ मटेरियल्स, तो अब रॉ mm, मटेरियल्स में मैं बेचने कहाँ पे वाला हूँ, वो डिमांड या वो मार्केट में वो इकोसिस्टम है कि नहीं, कि जहां पे मैं ये चीज बेच सकूं. रॉ मटेरियल okay, प्रोवाइडर्स का क्वालिटी क्या है, सब्सिडी क्या है. राइट नाउ देयर टू एस्पेक्ट्स टू इट, एंड दिस इज सब्जेक्टिव इन ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क, कि mm, आपको वहां पे जाना है जहां पे डिमांड है, या आप वहां बैठे वो धंधा करना चाहते हो वो प्रोडक्ट का जहां पे आप बैठने वाले का डिमांड है. कि जैसे टेक्सटाइल है तो सूरत में ही आप धंधा करो. okay, So that is the thinking on how you should start doing this. But as I said, okay, first of all, before even going to any consultant, it has to be validated by you 10 times कि मैं ये करना चाहता हूँ तो क्यों करना चाहता हूँ, इसमें मैंने क्या क्या got सोर्सेज it. में रिसर्च किया है, इसमें मैं अब यार अपना तो कितना, आपका तो जीतो है, सब है, आपका तो नेटवर्क ही कितना अच्छा है, आपके चाचा मामा लोग. I mean, it's such a well-knit thing wherein you can get their thinking pattern on board. What do they think about it? I'll tell you and write it down. ये बहुत बहुत ही जबरदस्त है कि अगर अगर आप मोस्ट ऑफ आपकी किसी भी फैमिली में ऐसा एक फूफा या ताऊ या ऐसा कोई एक होगा कि जो वो 10 सवाल पूछेगा ही पूछेगा. वो ईगो के बेसिस पे होगा या वो हाँ, इम्पोर्टेंस के बेसिस पे होगा. आप आपका बिजनेस प्लान इनिशियल लेके है ना, ऐसे लोगों के पास जाइए, उसको प्राइमरी रिसर्च बोलते हैं. ठीक है. okay, और वहां से आपको पता चल जाएगा, वो 4 चीजें बोलेंगे ना, उस वो 10 चीजों में से 5 से या 6 यूजलेस होगी. यूजलेस इन द सेंस के जो they are अपने not काम की नहीं relevant. होगी. बट देन देयर बी 3 to 4 थिंग्स विच विल बी अ मिलियन डॉलर इनपुट्स, के जहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये. नाउ having done that, you go to a consultant like me, okay, now this is what I know, help me, how do I go about figuring out to set up this. Okay, thank you. Welcome. Rushabh, I'm taking many of the time. I'll just, before we go into the Q&A, I'll just 2 minutes, 3 minutes, I'll just complete this. This is the last, yeah, this is the last. So now having said that, the challenges have been given, but how do you navigate through those challenges is there are many information platforms in terms of manufacturing, इंटरवेंशंस, और आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग चाहिए करना पड़ेगा, अगर कुछ चीज कर रहे हो तो उस पर क्या कंप्लायंस लगेगा, उसका कितना टैक्सेशन है, उसमें लेबर क्वालिटी क्या है, वो सब आपको है ना. बहुत सारे पोर्टल्स है. गवर्नमेंट ने इतना, देयर इज अ नेशनल सिंगल विंडो system of land banks that government is creating on a national level. There's investors facilitation portal. There's industrial associations of states, जैसे गुजरात में GIDC है, महाराष्ट्र में MIDC है, ऐसा. Second, single window clearance. Always think on this basis कि
what are the industries, what are the products, or even if there are no government sources which are providing single window clearance at a local level, are there consultants who help me do this, राइट? गवर्नमेंट इज ऑलरेडी कम अप कि अभी आपको जैसे यहाँ पे ना जम्बूसर है बड़ौदा के 15-20-45 किलोमीटर दूर, जहाँ पे इंडिया का सबसे पहला बल्क ट्रक पार्क आ रहा है। तो अब वो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया कि दुनिया में कहीं पे भी वो फार्मा कंपनी बैठी है, वो यहाँ पे डालना चाहेगी तो उनको प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट? Third is outsourcing of non-core local activities to local implementers. Always be pretty clear on this कि this is an investment which I am making. मेरा रुपया तभी आएगा जब मैं जितना जल्दी हो सके मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर सकता हूँ। और जैसे मैंने वो प्रीवियस एग्जांपल में बोला कि मेरा काम है फेविकॉल बनाना, तो जितनी दूसरी नॉन कोर एक्टिविटीज है ना वो आउटसोर्स कर दो। इंडिया में क्या है अभी तक का कल्चर विच यंग पीपल लाइक यू शुड जस्ट एबॉलिश इट लाइक दैट ओनली कि सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। if that is the culture that you will go forward with, even if your dads uncles are doing this, tell them कि we need to delegate, we need to outsource. We know not even Reliance or Adani can do all the activities that are there in one stop. Why? I'll tell you, there's something called as third party view which is very much important, right? So always think of outsourcing certain के जैसे एक बिजनेस चला रहा हूं ना, तो एज एंटरप्रेन्योर्स 80% ऑफ योर टाइम के दिन में आप 9 या 10 घंटा काम करते हो, तो 8 घंटा बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में ही जाने चाहिए। अगर वो नहीं जा रहे तो यू आर लूजिंग आउट ऑन योर स्केल एंड पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज यू कैन आउटसोर्स एचआर स्टफ, यू कैन आउटसोर्स अकाउंट स्टफ। अभी क्या होता है कि पहले वो गल्ले पे बैठा, पहले वो वहां पे बैठे, वो पहले पूछेगा कि चल वो हिसाब दिखा। अरे यार, आपके पास 10 सिस्टम है वो हिसाब का वो करने का, आप अपना धंधा बढ़ाने का कैसे कर सकते हो वो सोचिए ना, वो समझिए ना पहले। सो दैट इज दैट efficient use of data and technology. We are still not using concepts like market research, data intelligence, big data, data analytics to make faster decisions, to make quick decisions. One stop solutions provision, this is a subset of single window clearance कि वन स्टॉप चीज। मैं सिर्फ कौशल को जानता हूं, अगर अकाउंटेबिलिटी है तो कौशल के पास होगी, मुझे सवाल पूछना है तो कौशल को पूछना है, क्योंकि मैंने उसको सब चीज आउटसोर्स कर दी। अब वो जवाब नहीं दे पा रहा तो मैं दूसरा पे घुसूंगा। लेकिन दिस शुड ऑलवेज बी दी पर्सपेक्टिव कि आई एम अ डोमेन एक्सपर्ट ऑफ माय थिंग, रेस्ट ऑफ इट शुड बी अ प्रेरोगेटिव ऑफ समवन हु इज अ डोमेन एक्सपर्ट ऑफ दैट थिंग, राइट? एंड मार्केट फिजिबिलिटी पे तो अपना बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो गया है। सो या दिस आई मीन इन आई एम श्योर हितेश इन व्हाटएवर टाइम दैट यू प्रोवाइडेड मी आई हैव बीन एबल टू ऐड सम वैल्यू। मैंने सोचा था पहले कि कुछ पीपीटी या ऐसा कुछ नहीं रखूंगा, but I thought just to give a proper framework it will required, we can have the questions now. No, it was amazing. I must say, this is the first time I have heard you speak actually structurally, so I got to learn. There are still a few questions. So please, Ankit, right, you go first. After that, Aman, all others, please. And sir, don't worry about the time. I'm more than happy to discuss. Okay, So great. as far as you are there, Yeah, it's not. yeah, go. So go ahead, like Ankit first, right? Ankit Jain, please. Yes, hello, sir. Hi. Thanks for the wonderful speech and session. I think a lot of learning. I have a question. So, सर अभी जो देख रहे हैं कि अलग अलग स्पेसेस में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं, ऐसा लगता है सारी अपॉर्चुनिटी सॉफ्टवेयर स्पेस में ही निकल रही हैं। बट व्हाट अबाउट हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है, बी इट स्पेयर पार्ट्स और अदर पार्ट्स, उसका भी स्टेटस क्या है? वो ऐसा क्यों लगता है कि ये तो मतलब डूबने वाली इंडस्ट्रीज हैं और जो भी हो रहा है सब मतलब पैसा सॉफ्टवेयर में ही है? ऐसा इंप्रेशन है एक सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। बिकॉज जो रिसेंट जो स्टार्टअप्स जो कि लेट्स से बड़े होके अभी आईपीओ की तरफ जा रहे हैं, देयर ऑल सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स, बट नॉट दैट हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? देख, इसमें क्या रहता है कि आप, मैं ना सिंपल बोलता हूँ, आप सुबह के पेपर में जो चीज पढ़ते हो ना, वो थॉट आपके पूरे दिन वो साथ में रहेगा। ये मैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सिंस यू आस्क क्या मेरा क्या सोचना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, एआई, these are all media hype words. I'm not saying they don't have an impact.
I'm not at all saying that. लेकिन venture capitalism, seed funding, level 2, level 3, all of these are relevant things to be done. But at the base, these have been hyped by media, क्योंकि वैल्यूएशन की गेम में आज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है कि इतने यूनिकॉर्न हो गए, इतने डेकाकॉर्न हो गए, लेकिन मैं एकदम जमीन का आदमी हूं. मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आज की डेट में सॉफ्टवेयर इज स्टिल अ सर्विस इंडस्ट्री एंड इट इज गोइंग टू ग्रो बेटर देन एनीथिंग. But primary activities of manufacturing is going to give you that exponential growth. And second thing, कि वैल्यूएशन की गेम कब तक चलेगी? इफ यू विल गो इनटू द मीडिया और डेटा ऑफ एनालाइजिंग दिस मीडिया ऑल्सो, यू विल सी इनटू दैट कि वो कोविड टाइम में है ना, सबने अपने घर घर बैठे वो स्टार्टअप्स निकाल दिए ना, उसका ये एक सबसेट हो रहा है बाहर का. सो दिस इज माय understanding of it. I may be absolutely wrong, or all of you might not agree with me, but since you asked my opinion, this is what I think. Thank you, sir. हाँ, और अगर उसमें आप बोल सकते हो हाँ कि सर आप मतलब ये ऐसे थोड़ी ना होता है यार, मतलब मुझे तो ऐसा पता है, तो उसका भी अपने चर्चा करके जो है वो और क्लैरिटी ला सकते हैं. Can I go ahead? या प्लीज. So I have a question. जो ये गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स और पॉलिसीज आती है ना, so where do you check this? Like, is it available online कोई particular इनके प्लेटफॉर्म पे, या where do you find? जैसे मैंने उसमें 2-3 चीज बोली ना, देयर इज अ पोर्टल कॉल्ड इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन पोर्टल, IFP. Then Okay. there are websites of local industrial associations, कि जैसे गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, GIDC. Then there are Okay. pages of Make in India. Then there are government pages of, नहीं नहीं hello, then there are government pages of departments, कि जैसे मुझे Okay. अगर अगर अभी Z सर्टिफिकेशन MSME के लिए बहुत चल रहा है, क्योंकि ESG पैरामीटर्स में अभी MSMEs को एनवायरमेंटल कंट्रोल्स में आना पड़ेगा. तो उसके लिए आप अर्बन हाउसिंग या रूरल हाउसिंग डिपार्टमेंट के उस पे जाओगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन है उसका डिसीजन मेकर, क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है. इसमें क्या है, यू विल हैव टू सिट ऑन द इंटरनेट एंड go through putting in the right keywords on Google or asking the right questions on ChatGPT, and your first point of initiation will happen through that. Got it. Thank you. Yeah, like others, I know there are 2 more questions, so please go ahead. Anyone? Sir, they're asking my phone number. So Hitesh sir will provide you my Yeah, I'll share contact details. I'll share like on the group. Yeah, so don't worry about that. I think yeah, 301376, that's the name of the number. Please. कौशल भाई, मेरा नाम आविर है और मेरा टेक्सटाइल में साड़ीज का काम है, जोधपुर राजस्थान से. तो मैं एक और स्टार्टअप के लिए सोच रहा हूँ दैट रिलेटेड टू फार्मा. तो उसके लिए मतलब एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे सकते हो? क्योंकि अभी शायद फार्मा का बहुत अच्छा डिमांड है. तो एज लाइक आपने जो वर्ड यूज किया है, जुगाड़, तो ये हमारे जोधपुर का बहुत फेमस वर्ड है और हितेश भाई इसे बहुत अच्छे से परिचित भी होंगे. तो कहीं ना कहीं अभी मेरे को टेक्सटाइल में 10 साल हो गए हैं, तो वो एक चल रहा है ऑटो मोड के ऊपर, और मैं सोच रहा हूँ एक नया सेक्टर है, क्योंकि फैशन के तो अभी बहुत चेंजेस हो रहे हैं. तो एक फार्मा से रिलेटेड मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप क्या मुझे सपोर्ट कर सकते हो? सर मैं आपको एटलीस्ट, मैं तो अभी गुजरात में ही काम करता हूँ, और दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आपको फार्मा का यूनिट डालना है तो अभी गुजरात के अलावा कहीं और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ओके. एशिया का सबसे बड़ा बल्क ड्रग पार्क यहाँ पे, जैसे मैंने बोला आपको, जम्बूसर में आ रहा है. मिनिमम ओके. मिनिमम 5 CR इन्वेस्टमेंट चाहिए. Of course, this is across your initial 3 to 4 years, but yes, that is the minimum investment what I think, objectively speaking. फिर उसपे बहुत सारा कॉम्बिनेशन है कि आपको API करना है, जेनरिक करना है, टैबलेट मैन्युफैक्चर करना है, R&D कितना लगेगा, वो सब है. लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 3 या 4 साल के हॉराइजन में आपका ब्रेक इवन करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट पे, तो 5 या 6 CR से चालू करना चाहिए.
Okay, okay. Good. Okay, thank you. Thank you. Sarvagya, right, your question, please. Okay, Sarvagya. Jajinin. Yeah, Jai. I'm audible? Yes. Yeah, Yes. my name is Sarvajit. I'm from Bhopal, and it's my first Zoom meeting I've attended from you guys. Sir, my question is, I have a family business, and we have a retail business in Bhopal. Okay, and I'm a member of D2 also. So I see a lot of people talking about the big things and all things. So what I think कि मतलब वो टाइम मेरा टाइम कब आएगा कि मैं इस टाइप की बातें कर पाऊंगा. तो आपने जैसे अभी आपने जैसे अभी बोला कि चैनलाइज करना है, तो हमारा फैमिली बिजनेस है, और जो आपने बताया चाचा और ये लोग जो पार्टनर पे चलते आ रहे हैं वही चल रहा है. So somehow we convince them to do the things like systematic, because AI is in trend and you can go online and do this that. And कुछ चीजें वो मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं. तो अपने बिजनेस को सेल्फली अगर मेरे को ग्रो करना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए और किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए विद इफ आई डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट बैकअप और फाइनेंशियल सपोर्ट एंड आई हैव टू स्टार्ट विद दैट. तो maybe it's मतलब possible नहीं होगा, फिर भी I need some sunshine lights for that. यार देखो, अभी एक दौर था जब ये अपना सिलिकॉन वैली है ना यूएस में, Yeah. लेट अर्ली 90s से लेके अर्ली 2000 तक आपको वहां पे एक आइडिया था ना, तो वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते थे, क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा था कि आपको रुपए भी मिल जाते थे, वो आइडिया को इवेल्युएट और बैक करने वाले इन्वेस्टर भी मिल जाते थे, ऐसे लाइक माइंडेड पीपल भी मिल जाते थे. अब मैं, और ये बहुत ही डिसरप्टिव स्टेटमेंट मैं करने वाला हूँ, बट दैट इज हाउ आई वर्क इज, अगर आपके पास 2-2.5 लाख रुपया है ना, तो आज की डेट में आप कोई भी आइडिया लेके चलो ना, इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकता है. एंड दिस इज फॉर बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक हितेश सर का बिस्टार्ट या जो भी है, मेरा जो काम है वो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि, और वापस से मैं वो चीज पे आऊंगा कि मार्केट रिसर्च का है ना 1% भी इम्पैक्ट जो होना चाहिए ना, वो यहाँ पे नहीं होता. अगर मैंने खुद बैठ के रिसर्च किया है कि ये चीज है, जहाँ पे अभी इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, एक बढ़िया सी पिच कैनवा पे या पीपीटी जाके बना दी और पूरा क्लैरिटी दे दिया एक इन्वेस्टर को, और वो इन्वेस्टर मैं बोलूंगा आपके पापा नहीं, तो वहां पे आप फैमिली सर्कल में स्टार्टिंग में जाइए, लेकिन सबसे मेन बात है क्लैरिटी. और वो क्लैरिटी 2 चीजों से आती है कि मुझे ये ऑन पेपर होना चाहिए कि अगले 5 साल का मेरा रुपया कहाँ पे जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, और कहाँ से आने वाला है, कैसे आने वाला है. और वो क्लैरिटी आ गई ना, I'll tell you के people, I mean you're all chains यार, you know what loaded your families and other people are. The people are sitting with money in India right now. It's just that cultural shift needs to happen, which is I'm proclaiming it. It's happening tremendously well, being driven by the Marwadis, Gujaratis, and Jain families of the world, wherein now they are giving that freedom to their second generation कि हाँ, मैं वैलिडेशन के लिए बैठा हूँ, लेकिन तुम लोग करो. लेकिन हम लोग मिस आउट कहाँ कर जाते हैं कि वो क्लैरिटी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई में भी क्या है, एमबीए होके निकल गए, लेकिन आज की डेट में मैं 10 में से 6 या 7 एमबीए लोगों को पूछूंगा ना कि एक बिजनेस प्लान बना के दे प्रैक्टिकली, वो नहीं बना पाएंगे. एंड दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग, इज व्हाट आई फील. तो क्या ऐड ऑन वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने मार्केट रिसर्च की बात करी थी, तो इससे कोई कंपनी मार्केट रिसर्च कराती दे चार्ज हैवी, आई थिंक यू शुड चार्ज हैवी अमाउंट. अब जैसे मेरे पास क्लैरिटी भी, फर्स्ट सपोज इफ आई हैव अ क्लैरिटी कि मेरे को अपना बिजनेस में क्या करना है, कैसे करना है, एंड यू सेड कि यू शुड नो कि 5 इयर्स का आपका पेन पेपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि 5 साल में आपका क्या है, कैसा रहेगा. तो वो मैं अगर अपनी सेल्फ अगर रिसर्च करता हूँ, तो दैट विल बी अराउंड, मतलब 50% ही वो क्लियर विजन क्लियर ही रहेगा कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, अनलेस कि मैं कोई रिसर्च करूँ या करवाऊँ. तो उसमें अगर फंड डालूंगा,
और क्योंकि फ्यूचर किसी का कुछ पता नहीं रहता कैसा क्या है, अगर मैं उसमें भी फंड डालता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं अपने का 2-2.5 लाख रुपए हो तो अपन करेंगे, और 2-2.5 लाख रुपए अगर आप लोग ही चार्ज कर लेंगे तो बचेगा क्या मतलब? व्हाट इज वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। इसमें क्या यस। है कि ये ना इन्वेस्टमेंट है। कॉस्ट, ओके। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कि ओके, आज कॉस्ट की ऑफ डेट में मैं अपनी इक्विटी जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके ओके। ऊपर जो भी ये पूरा गेम जो क्रिप्टो करेंसी का हुआ था ना, ग्लोबल लेवल पे या इंडिया पे, वो यही फंडे पे हुआ था कि कोई चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो अंडरस्टैंड दिस के व्हाट एंड इट्स नॉट के आपको कंसल्टेंट को 2-2.5 लाख देना ही है। अगर वो क्लैरिटी आपने ही दे दी तो किसी को नहीं देना। बट द पॉइंट इज दैट कंसल्टेंट विल हेल्प यू टू get that thing from zero to a value which in a space of 6 to 8 months becomes such a figure where then you can go to an investor and जो चीज जीरो से स्टार्ट हुई थी या जो 2-2.5 लाख से स्टार्ट हुआ था, वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने 7 कंपनीज को रुपया दिलवाया है in a space of less than 1 year. That 2.5 lakh becomes a minimum of 25 to 30 lakhs just on the basis of that idea. That is what I have done on a first hand basis, and that is why that cost of capital का जो पूरा पर्सपेक्टिव है ना, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। Yeah. Okay, great. I think we थैंक have यू सो मच few. फॉर I think we have few more questions. So I think it is like Rushabh. You want to go first, and then I think there's Yep. one more. Yeah, yeah. Go ahead, please, Rushabh. And as he said, try to put the video. Rushabh, Yeah, yeah, Rushabh. Sangvi, you had a question. Jai Jinendra, everyone. Am I Yeah. audible? Yes, you Yeah, are. Jai Jinendra, you are. Yeah. So the question that I was having, Rushabh, Rushabh, we are not able to hear you. I think we lost you. Or more sense for me to get it white labeled in my name from the manufacturer that are already situated in Morbi than enter into manufacturing, because sitting in Bangalore and operating industry or a manufacturing unit in Morbi would got will have a lot of hiccups or the management breakthroughs. So I just wanted your take on that, or the strategy that I can adopt on the same. I mean, personally, I feel you're thinking on right terms. I mean, there are many, some of them top are my friends also. They have an established infrastructure and they're even exporting to places like Brazil and Chile. So you're right in thinking that okay, you can have a white label or a B2B association on a strategic basis and deal with them. Okay, I'll bring in the buyers. Now tell me, how do I go about associating with you? Okay, thank you so much. great. That was a short and sweet one. Shrenik. Tatvam Jain. Yeah, Tatvam or Shrenik, right? I'm just saying all the names now. So anyone Yeah, can unmute and ask. Yeah, hi. please. This Yeah, is Priya this side. So my question is around the women entrepreneurs. So like to give you a background, actually I'm from a software industry. I used to work for Microsoft as a software engineer. So I left the job because of my baby and all. So now the baby is all grown up and I want to just rejoin. But instead of as an employee, I want to start it as an entrepreneur. So on the background side, my husband has an oil business. So he deals in palm oil and all this stuff. But being a mother, I realized the palm oil is not healthy. So I am more into those cold pressed oils and that wood pressed oils, which are so much into the market. So what's your thoughts in that? Because I can see there are already so many players. So should we enter into a market where already a players are there, or should we choose something where nobody is there? So first of all, congratulations. I mean, it requires guts to even think on this basis, and I'm so happy that women of India are thinking on those terms. So kudos to that. You should. I mean, first things first. Don't. I mean, if entrepreneurship is something that you're thinking, just go ahead with that. Now, to answer your question, it's a pretty subjective question. See, short term. बिजनेस रिटर्न्स में है ना, मैं और ये मेरी मेथोडोलॉजी मेरे कंसल्टिंग में मैंने सेट की है कि एक 3 साल से कम का रिटर्न होता है
एक 5 साल से कम का रिटर्न होता है और एक 7 से 10 साल के कम का रिटर्न होता है। और ये आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का पूरा मैट्रिक्स किस हिसाब का है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उस पे डिपेंड करता है। कि जैसे अभी मेरी 2 कंपनी है, marsbazaar.com और 32 एकड़। 32 एकड़ मार्स बाजार के बाद चालू हुआ, लेकिन वो रेसिडेंशियल कमर्शियल में है, तो उसका जो टर्नओवर है या जो बिजनेस का जो ग्रोथ है, ब्रेक इवन जो आ जाएगा, वो कम टाइम में आ जाएगा, बट देन दैट इज इट। there are more people in the market, the competition will ultimately catch up, and वो जो पूरा गेम है ना, वो 3 साल से कम का है। लेकिन मेरे पास वो क्लैरिटी है कि मैं इतना डाल के इतना लेके मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, या किसी को वो कंपनी बेच दूंगा, या दैट इज द होल माइंडसेट और क्लैरिटी दैट आई हैव। Whereas Marsbazaar is clearly a game of more than 5 years. I mean, Hitesh knows about it. It's at a scale which requires significant investment in terms of money, time, and everything. But when I pull off that business model, I'll have a market leadership in whole of India. So, but then that's a game of patience. I need to have investors. I need to have बोर्ड मेंबर्स who believe into that vision। कि जैसे एक लिंक्डइन का एग्जांपल है, 2004-5 में चालू हुआ था, अभी तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, वो वैल्यूएशन की ही गेम चल रही है पूरी। ये बात है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। So on that basis, you need to decide कि now, as you said, see, passion also matters। कि आपने वो एक छोटी सी बात की, तो पाम ऑयल के बदले कोल्ड प्रेस ऑयल, अभी वो धंधा बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो वो पैशन से आपने थोड़ा सा एक मार्केट फिजिबिलिटी करके उस पे आप चालू कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि मजा भी आएगा, रुपए भी मिलेंगे। Okay. And how about, like, do government have any special services for women entrepreneur? Like, is there any benefits which women can get from the government side? For this cold example, this cold press industry that you said, women get 2% cheap loans, plus cottage industry में बहुत सारे दूसरे फायदे भी मिलते हैं। I know of a company which is exclusively on an India level and all female workforce. Okay. And they are getting a lot of subsidies and help from government and other charitable organizations also. Okay. So is there any portal or something which I can refer to, There are multiple portals, but you can connect with me. We can have a one-to-one and go into more detail. Okay, surely. Thank you so much. Thank you. Yeah, Isha Ostwal, sir. She's been messaging me directly. Yeah, sorry. So please go ahead. Anyone. Isha, if you quickly, want to unmute, or should Yes, I'm extremely sorry. I was driving, so I couldn't switch off on my video. How are you, sir? I'm fine. How are Great you? talking to you. I've been listening to you while I was driving. So I had a question similar to someone. They were talking about pharma industry. So I have a wholesale business of surgicals. So we are eventually, it's a family business, a traditional family business. Eventually want to venture into manufacturing. So I wanted to take your take on the same thing. Surgical, I mean, if I'll be very objective about that industry itself, is somewhat related to chemical and pharma industry, and it has a superb growth potential. So doing a proper feasibility study, you should definitely explore that. Definitely, sir. Thank you so much. We'll definitely connect with you. I'll talk to Hitesh, sir. He'll provide us the details. Yeah, thank you. Thank you. Short. Maybe last 2 questions, because I know we are asking at Kaushal to just sit with us, which I didn't ask him earlier. So last 2 questions, right? Please. Sir. Yeah, please. Go ahead. Hi, I'm Shrenik Jain. Hi, Shrenik. Yeah. Jai Janendra. I'm attending this meeting for the first time, so I'm not used to. Okay. Just wanted to ask Hitesh that yes, Kaushal. Actually, I just moved to Ahmedabad to expand my business, and I guess it would be the right time to connect with you. Just wanted to know, do you have any idea about the scrap recycling of cars? Yes. I mean, okay. I'll just take a couple of minutes to. This is a wonderful. I'll tell all of you. अगर आपको किसी धंधा नहीं पता ना, एक सिंपल किसी भी चीज का रिसाइकलिंग का धंधा आप आज की डेट में डालोगे ना, वो सक्सेसफुल होगा। सही है, that's true. और उसमें अगर आपने पानी यार और वेस्ट पकड़ लिया ना,
तो 100% आप सक्सेसफुल हो. And on those terms, Shrenik, I'd like to tell you is, yes, I have a fair bit of idea about the scrap industry, and it is one of the industries which is going to have a superb CAGR 3-5 years down the line. So I would like to connect, or if you have an office at Ahmedabad, I'll come and meet you. Actually, we are thinking of getting a registered this scrap recycling thing, because eventually the ones who want to give their cars to scrap recyclers, they have to give to a registered recycler so that they can get the certificate for subsidy of next registration. Yes. So, and plus, I also want to know the benefits of the government's of the Gujarat government for the scrap recyclers. I am currently into stainless steel recycling and ferroalloys. So this is a new field again. So Yeah, I mean, I don't have an office in Ahmedabad, but I do come once in 15 days or so. I'm coming on Monday. So if Hitesh sir will just get in touch with you or provide my contact details. Is it is it fine if I share your phone number here on the chat? Yeah, I don't mind. For There are sure. other people who Yeah. left. So So yeah, after so WhatsApp. so they will approach me anyway, or I'll put it onto the group. Right. So I just put Kaushal Chokshi's phone number on the group for everyone. 9099016026. so thank you so much. Yeah, Thank you. Yeah. Can I go ahead with have one more question? yeah, please. Yeah, I mean, So if I sorry, Aman, you asking yeah, me for tell a me. second. I just have to ask anyone if I mean someone Sure, may sure. have a question or not. If no one has, you can go ahead. Okay. Yeah, tell me. So I want to know, like, is there a way to find out like which state is giving more better incentives for establishing any particular segment of manufacturing facilities? Because Mm, how in every country is a different like that, right? So I'm sure India may be hota hoga, but how do you find out? That's a very valid question. There's no like for like comparison which happens. There are some websites कि जैसे ईवी में है, ईवी में आप 3-4 पैरामीटर्स पे देख सकते हो कि कौन सा स्टेट ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है. Hmm. बट वैसा डायरेक्ट नहीं है. फॉर दैट यू नीड टू गो टू a researcher or someone who can do that analysis for you. Okay. Like, do you also do it on that big scale level, like, Yeah, or yeah. you just do for Gujarat? नहीं, I mean, as far as research is concerned, I've done it on a global. अभी भी एक कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट चल रहा है. So I do it on a global basis. Okay, I'll get in touch with you regarding that. Great, sir. Okay, so I think we are up the hour. People are joining now. I don't know, right? They must have heard something interesting going on here. So Akash, if you are around, do you want to say a few words? Because I know This was a really interesting session. Basically, जब कोई बोलेगा ना कि मेरे पास कोई मैन्युफैक्चरिंग का आइडिया है तो हम लोग बोले कि हमारे पास कौशल भाई है तो I'm sure like a lot of the audience got to know so many things that were never they had thought about before. Many of them who are already in manufacturing, and I'm sure like with your guidance, these guys it will be very much beneficial. It is going to be very beneficial for all. So I would like to thank Hitesh sir for bringing and connecting us with such a great personality. Thank you, Kaushal sir, for your time and guidance today. Uh, for all the participants for joining in the session, I'd like to thank them. Just a quick update for all of our Cheetopreneurs. We have received the business plans from more than 130, 135 people. And our team has been reviewing it in the background and appreciate everyone's participation in filling out those. I would like to get your feedback, and so we'll be releasing a feedback form tomorrow. Would be great if you could fill out and let us know what you feel about the program and what kind of help are you looking for. We are having our next session on Sunday. We will be announcing it shortly, and that will be with another expert, domain expert in the
food industry. So